Hello, how's it going, guys? Welcome back to the Crictime Podcast. It's episode 13, and Suyash is back with us again today. And the World Cup is in full swing. And before we get into the World Cup and discuss the Asia Games as well, make sure you leave a like rating on this podcast. Make sure you subscribe. Make sure you add it to your playlist. Really means a lot. Thank you for the support in the last few episodes. We've been hitting almost 200 listens all over all the platforms. So keep the support going. Let's continue it and make sure that this continues for the next few episodes as well with the World Cup here as well. Getting right into it, I think let's firstly discuss the Asia Games. Suyash, India, both men's and women's team earning a gold in that, beating Afghanistan, the men's team in the final. Great to see that we've got a B team as well that's capable of winning something as well. Yeah, absolutely. Women's तो काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड ओनली, मतलब वो तो पूरा वन हाँ. साइडेड, और आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही खत्म, वो तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था. एंड मेंस में थोड़ा सा मतलब मैं देखा पाकिस्तान की टीम काफी वीक भेजी थी उन्होंने. एंड कई टीमें पहले ही एलिमिनेट हो गई, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब हम्म. फाइनल में अफगानिस्तान आई. बट वही है, अफगानिस्तान वाला मैच जो फाइनल था, वॉश आउट हो गया. इंडिया की रैंक अच्छी है इसलिए हमको गोल्ड मिल गया. सो लकी हो गए हम थोड़ा वहां पे. बट हाँ, अगर हम्म. मैच कंप्लीट भी होता हम जीत गए होते. सो वेरी हैप्पी, फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में हमने टीम भेजी एंड वी वॉन बोथ द गोल्ड्स. एंड ऑल इन एशियन गेम्स आई थिंक इट वाज द बेस्ट एशियन गेम्स. वी वॉन मोर देन 100 मेडल्स, हम्म. वर फोर्थ इन द टैली. सो आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल भी. तो वेरी हैप्पी विद द एशियन गेम्स दिस टाइम अराउंड. Obviously, yeah, because honestly, as a country that has 1.3, 1.4 billion people, you expect Indians to kind of be dominating in every single sport. And somewhere जब हम लोग Olympics की table देखते हैं, usually you see India in the mid table bottom, and you think, yeah, we could do a lot better. So this is kind of right up there. And we're not just talking about cricket in general, but sports in India in general. It's nice to see us win so many gold medals, and it's just a good way to build up for the next Olympics as well. So that'll be that'll be a one to watch out for when the next Olympic comes as well. Talking about the World Cup, भाई start जिस तरह से हुई थी इंग्लैंड न्यूजीलैंड से, उससे पहले भी भाई no opening ceremony, empty हाँ. stadiums, is ODI cricket dead? That's a conversation जो I think बहुत सारे लोग कर रहे हैं. Because last World Cup अगर याद हो 2015 में भी actually जो ऑस्ट्रेलिया में था, packed stadium, first day, first show kind of thing, every single match. And then you saw the 2019 one as well. I remember every single stadium was kind of sold out, whether it was a Bangladesh Afghanistan game, whether it was a Sri Lanka Afghanistan game, or any kind of other game with weaker teams as well. So it's a bit disappointing. Yeah, Indian crowd आ ही नहीं रहा है. Maybe it's because हम लोग के यहाँ सब्सक्रिप्शन इतने फ्री के हो जाते हैं, हॉटस्टार, स्टार स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ, कि भाई फैंस कहते हैं कि चलो घर पे ही बैठ के देख लेते हैं. और गर्मी और वेदर ऑब्वियसली दैट बीइंग अ फैक्टर एज वेल. हाँ, और आई थिंक ट्रैवलिंग फैंस भी उतने नहीं है, राइट? लाइक दूसरी हम्म. कंट्री के फॉलोअर्स, मतलब वैसा लग नहीं रहा है वर्ल्ड कप हो रहा है. अगर वर्ल्ड कप जैसे आप मतलब कोई और भी स्पोर्ट का वर्ल्ड कप देखो, सो एटलीस्ट ट्रैवलिंग फैंस होते हैं. बट यहाँ पे ट्रैवलिंग फैंस कितने, मतलब मुश्किल से 100-200 होंगे, दैट्स ऑल. सो बहुत अजीब सा लगा यार मुझे, मतलब लगा नहीं कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया. एंड स्पेशली दैट इंग्लैंड न्यूजीलैंड गेम, यार आई वाज एक्सपेक्टिंग सम ऑडियंस. मतलब चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि 1.5 लाख या 1.25 लाख वट एवर द कैपेसिटी इज, तो ऑब्वियसली फुल नहीं भर सकता स्टेडियम. बट एटलीस्ट 30%, 40% ऑक्यूपेंसी तो दिखे, वो भी नहीं दिखी यार, मतलब. हम्म. एंड जो हाइप बनाया जा रहा था लाइक 2-2.5 महीने पहले कि भाई वर्ल्ड कप के किसी भी मैच का टिकट मतलब बिकेगा नहीं, एंड सडनली अभी कौन सा इंडिया पाकिस्तान का गेम है ना हाँ, जिसमें हाँ. 14,000 न्यू टिकट्स हैव बीन रिलीज बाय वो हाँ, बीसीसीआई एग्जाम्स आ कंपनी. गए. सो आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग 2 मंथ्स बैक कि भाई हॉस्पिटल के रूम्स बुक कर रहे हैं लोग एंड ऑल. हाँ, बट हाँ, अभी तो देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में मतलब इट्स मोस्ट ऑफ द, इवन आज का यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाँ. गेम, जब ऑस्ट्रेलिया वर बैटिंग फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स, इट वाज नॉट हाउसफुल. जबकि यही ओडीआई क्रिकेट, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मतलब आज से 5-6 साल पहले ओडीआई क्रिकेट वाज सो सो फॉलोड कि भाई कोई बायलैटरल भी होता था तो वो पूरा हाउसफुल होता था. सो यू आर, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली, you're spot on कि भाई मे बी ओडीआई क्रिकेट इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग राइट these days. हाँ, आई थिंक दैट्स अ बिग फैक्टर. ऑनेस्टली मुझे मुझे पहली बात तो सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात जो लगी थी वही थी कि जब भी मैं वर्ल्ड कप देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि यार इट्स यूजुअली द होम टीम दैट प्लेज द फर्स्ट गेम. दैट्स द ओपनिंग गेम ऑफ द Yeah. टूर्नामेंट. यू हैव द होम टीम प्ले. And especially it's always mostly against the reigning champions of last time. So you would obviously have India versus England as your first game, and that'll obviously create hype. भाई Indian fans obviously आएंगे, फिर England के भी fans थोड़े बहुत जो भी travel कर रहे हैं जो भी आए होंगे वो आएंगे, and you want to always see a tough competition. एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड इंग्लैंड, वो भी मैच बहुत जबरदस्त था जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेला. बट
somewhere not having that opening ceremony, not having all of these kind of events or marketing events right before the World Cup shows कि भाई somewhere there's not enough interest in this and no one wants to spend 8 hours under the sun or in a stadium, spend so much money traveling, go there. Whereas, you know, आजकल तो भाई phone लगाओ, Hotstar खोलो, log in करो, and you're watching it for free. So that might be a big kind of thing. No disrespect to Hotstar or anyone who watches on there. भाई मुझे मुझे बताना, मेरे पीछे बताना, जो करना करो. भले साहब, जहां तक की फील्ड की बात करी जाए तो भाई इंग्लैंड न्यूजीलैंड क्या गेम रहा है वो. इंग्लैंड ने 282 बनाए थे, if I'm not wrong. न्यूजीलैंड chased it down in 36 overs. ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो भाई मुझे लगा था इंग्लैंड की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और मुझे लगा नहीं था कि न्यूजीलैंड का कोई चांस बनता था वाला गेम जीतने का, क्योंकि प्योरली बिकॉज भाई केन विलियमसन खेल नहीं रहा था और उनके पास पेस बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी है. अहमदाबाद में जनरली व्हाट हैज वर्कड हैज ऑलवेज बीन स्पिन या फिर मीडियम पेस बॉलिंग. वी सीन हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, अश्विन, these Indian kind of guys, spinners kind of perform way better than I guess other kind of bowlers. So what's your thoughts on that before we get into the details? यार अब in the prediction video I was very confident with England. I'm still very confident with England, but just it's a worst possible start for them. And talking about New Zealand, भाई मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है. मतलब they didn't had Williamson, they didn't had Lockie Ferguson, they didn't had Saudi. मतलब उनकी बॉलिंग में कौन ही था? If you see the big name, only Trent Bolt was there, Hmm. right? फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को उन्होंने जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया है, इट वाज अमेजिंग यार. मतलब द वे दे वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट देम टू लाइक 280, आई मीन इनक्रेडिबल अचीवमेंट बाय द बॉलर्स. एंड देन आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे फाउंड आउट दैट रचिन रविंद्र कैन बैट. आई मीन सीरियसली मैन, कौन कर रहा है उनकी टीम में ऐसे एक्सपेरिमेंट? एंड द वे दे दोस एक्सपेरिमेंट्स आर वर्किंग आउट. आई मीन सीरियसली, जो उसका नाम है उसने खुद बोला है, राइट? रचिन इज Rahul, Rahul plus yeah, Sachin, and it yeah. actually looked like an inning of Rahul plus Sachin together. So kudos to him. And again, as I said कि भाई न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तो इनका रखा है, and they are well on the way now. And even without Kane Williamson, Saudi, and the Lockie Ferguson, I think Ferguson will be back in the Hmm. second game, but still a great achievement by New Zealand. हाँ भाई, ऑनेस्टली यार, क्योंकि आई थिंक अगर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप देखी जाए तो भाई उनके पास इतने स्टार प्लेयर्स थे कि आई थॉट कि ठीक है, दिल मैनेज. और अगर इट्स वन टीम वेयर यू लुक एट इट एंड यू गो ठीक है इनका कोलैप्स हुआ है, बट देन यू ऑलवेज से कि हाँ इनके पास अभी भी फायर पावर बचा हुआ है अप अंटिल नंबर 6, नंबर 7. मे बी यू माइट इवन वांट टू इंक्लूड मोइन अली या आदिल राशिद टू अ सर्टेन एक्सटेंट एज वेल, to give you that 30-40 runs combined at the end of the innings. So I guess credit to Joe Root for hanging in there. 77 of 86. वही एक एंकरिंग इनिंग्स थी इंग्लैंड की अगर देखी जाए. बाकी सब तो काफी लो स्कोर्स थे, और फिर कलेक्टिवली 286. एंड आई थिंक यू राइट इन सेइंग कि न्यूजीलैंड ने जो किया था कि बस वो पार्टनरशिप्स बिल्ड ही नहीं होनी थी. वो प्रेशर करते गए एंड एट वन पॉइंट इंग्लैंड रियलाइज कि भाई सिंगल से कोई काम नहीं हो रहा, वी हैव टू गो अटैकिंग, और इसीलिए बहुत सारे विकेट्स ऐसे ही चले गए. सो irrespective, they took their chances really well. And you're right, रचिन रविंद्रा भाई, मैंने उसके बारे में कितनी वीडियोस बनाई हुई हैं, और मैंने कहा भी था वर्ल्ड कप से पहले कि ये एक बंदा ऐसा है कि जो मतलब न्यूजीलैंड को पता नहीं कहाँ से मिल गया है, कि इन्होंने बस ढूंढ लिया. इन्होंने कहा भाई तेरा काम ये है कि बस जा इंडिया में, वहां पे परफॉर्म कर ले, बस खत्म. उसके बाद जो करना करो. और सही है. इसकी आईपीएल सिलेक्शन तो है. अगर एक और सेंचुरी मार हाँ, दी किसी और आईपीएल किसी और गेम में, तो भाई ये इंडियन कंडीशंस में तो भाई ये परफेक्ट बंदा हो आई जाएगा. थिंक रूमर भी आ रही थी कि हम्म. 2 teams आर काइंड ऑफ लुकिंग आफ्टर हिम, या. कि भाई कितने में ले सब. जस्ट अ बिट ऑन इंग्लैंड्स बैटिंग. सो मतलब टैक्टिकली अगर मैं कहना चाहूँ कि कहाँ पे उन्होंने गलती करी है, सो दे टुक दैट उनका मतलब पैटर्न ऑफ प्ले है, दे टुक इट टू सीरियसली. आई थिंक हैरी ब्रुक्स इनिंग, जो वो ओवर हम्म. था जिसमें ही स्टार्टेड हैमरिंग, आई थिंक रचिन रविंद्र को ही मार रहा था, हाँ वेयर ही सही है. एक्चुअली उसने 4 6 6 3 शॉट मारे. एंड इट वाज मिडिल ऑफ लाइक 20 या 25 के बीच में कोई ओवर था उस समय. अगर आपने 3 बाउंड्रीज निकाल दी हैं, व्हाई वुड यू गो फॉर द फोर्थ बाउंड्री? सो दे टुक देयर टेम्पलेट टू सीरियसली, आई बिलीव. एंड मतलब उनको यही लगा कि भाई नीचे, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई नीचे तो बैट्समैन है हम तो मारेंगे, नीचे बैट्समैन है हम तो मारेंगे. दे टुक दैट टू सीरियसली, एंड दैट्स वेयर आई थिंक दे वेंट टैक्टिकली रॉन्ग. थोड़ा जो रूट से उनको सीखने की जरूरत है. बेन स्टोक्स की इनिंग्स को देखें. बेन स्टोक्स ऐसा नहीं है कि हर समय मारता ही रहता है, राइट? मतलब ही हम्म. इज समवन हु एनालाइज
analyzes, as you rightly pointed out, I think in our prediction video, कि he हम्म। analyzes the situation very well, and उस basis पे वो मतलब जहाँ धीमे खेलना होता है धीमे खेलता है, जब मारना होता है मारना होता है, सेम फॉर जो रूट. सो उस टाइप की इनिंग इनको चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई आए और मारे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं. ऐसा नहीं है भाई, इनफाइनाइट नहीं है आपके पास 10 ही विकेट. सो आई होप दे अंडरस्टैंड दैट वेरी soon enough, otherwise निकल जाएंगे भाई. द वे आई थिंक विल टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीका गेम. हाँ, जनरली देखा जाए तो भाई अगर आप सारे पांचों जो मैचेस हुए अभी तक उसमें भी देखा जाए तो they've all been, I guess, bar one, they've all been pretty low scoring games, and even if they've not been low scoring games, most of the players have had to play out the first 10 15 20 balls to understand कि भाई पिच में है क्या, बॉल कैसे आ रही है, and then they've kind of done it. और आज का भी गेम देखा जाए तो वही था. If I point out Pakistan Netherlands as well, और न्यूजीलैंड की भी जहां तक बात करी जाए तो भाई वो लोग भी जो प्लेयर्स, मतलब इवन इवन रचिंद्रा एंड कॉनवे, बोथ हैड प्लेड वेरी स्लोली टुवर्ड्स द स्टार्ट, और फिर एंड में दे रियलाइज कि हाँ भाई अब हो जाएगा गेम, and they carried it away. So England won't be able to play the way they do in England and play that kind of baseball. Obviously, he's not the coach, but that baseball जो वो टेस्ट मैचेस में खेलते आए और वो अटैकिंग स्टाइल जो उनका एक एक बन गया, एक that image that they have, वो they'll have to put it in the back of their minds and say कि भाई ठीक है, पहले 5-6 ओवर when you walk into bat, you have to first 10 15 balls you'll have to play very slow, singles low by gaps ढूंढो, and then when you understand the pitch well, that's when you can capitalize. It's not like conditions like England Australia जहाँ पे अगर बॉल स्विंग नहीं कर रही आप सीधे पहले ही बॉल आके मार दो और ले जाओ. थोड़ी स्पिन conditions tricky होते हैं always in that kind of perspective. So I think England, again, we can't rule them out. अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट है, अभी तो भाई एक ही गेम हुआ है, and it's against a strong team as well. It's one of the teams that can actually qualify. So for England, they'll want to look ahead and say कि भाई next game they've got against Bangladesh, so one of the weaker sides. What are your thoughts on like England's bowling I in that generally game? didn't find them too good. I think मैंने पहले भी बहुत, हम लोगों ने दोनों ने कहा था प्रेडिक्शन में कि भाई उनकी बॉलिंग है नहीं कोई इतनी खास, एंड हाँ. वो दिख गया था कि भाई विकेट्स ही नहीं ले पा रहे थे. और जब आप ओडीआई में विकेट्स नहीं ले पाते हो ना, वही होता है कि जो दो बैट्समैन है वो सेटल हो जाते हैं. पहले 5 ओवर 6 ओवर वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद एक बार सेटल हो गए फिर उनको हटाना बहुत मुश्किल है. एंड जनरली यही ट्रेंड है सारे मैचेस में, एक दो विकेट्स बहुत जल्दी जाते हैं एंड देन वो जो एक पार्टनरशिप बन जाती है फिर उसके बाद वो जो है रन आने शुरू हो जाते हैं. सो आई थिंक it's something to look at as well. It's a good discussion to have, as a coach and your team, because I think कितने बॉलर्स, 6 बॉलर्स उन्होंने यूज किए थे ऑन द डे, एंड एक विकेट निकाला in about 40 odd overs, so somewhere 36 overs, so somewhere they'll have to assess this as well, कि even if it was a low target, it wasn't a fighting chance. जैसे आज अगर ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो भाई पहले 5-10 ओवर उन्होंने इंडिया को बहुत परेशान किया, to a certain degree, first 15 overs actually, when we were like 50 for 2 or 50 for 4, something like 50 for 3, sorry. So I think England will have to pick wickets. It's these are not pitches where you can get away with restricting someone with runs, क्योंकि जब एंड में जब बॉल कुछ कर नहीं रही होती ना तो वो बैटर्स गेम होता है last 10 15 20 overs. It won't be surprising अगर बहुत सारे ऐसे मैचेस आए जहाँ पे you see a team play very slow through the first 30 overs, last 20 overs, and then the ball's not doing anything. You kind of just go after it and get the runs and equalize the innings to get 300 plus scores. क्योंकि आज के ओडीआई में let's be honest, 300 तो एक regular target हो गया. Anything below 300 is considered quite a low target. Obviously not on pitches where it's specifically bowling pitches, but generally यही trend रहा है कि भाई 250 300 is a safe target. Anything lower is a bit risky. Talking about the next game, पाकिस्तान नेदरलैंड्स, इसमें तो मुझे हंसी आ रही है बात करते हैं भाई. मुझे लगा था कि ये एक ऐसा डेड गेम होगा कि पाकिस्तान जीत के खत्म करके चली जाएगी घर और कहेगी भाई आज सिर्फ हाफ डे होगा मैच. मतलब यहाँ के टाइम से तो सुबह 9 बजे मैच शुरू होता है, एंड आई थॉट जब तक मैं 12-1 बजे तक अगर उठा, मैंने क्लासेस खत्म करी, तब तक तो गेम आधा खत्म हो जाएगा, बस एंडिंग का 5-6 ओवर बचे होंगे. बट पाकिस्तान ने मेक श्योर किया कि भाई फैंस को पूरा मैच देखने को मिले. 286 for 10 in 49 overs for Pakistan, 205 Netherlands all out in 41. Somewhere you thought कि Netherlands had a chance, पहले 2 विकेट्स तो जल्दी चले गए थे, फिर उसके बाद Bastille and that partnership that they had was quite incredible to see as well. Rizwan and Shakil, 68 runs each, 115 की पार्टनरशिप, 117 की पार्टनरशिप थी दोनों के बीच में. सो पाकिस्तान भी इतनी अच्छी लग नहीं रही वैसे इंग्लैंड ना के. ना, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर ने बचा लिया पाकिस्तान को. स्टार्ट तो वाज पैथेटिक, हॉरिबल. बट हाँ, एक चीज थी कि उन्होंने अपना रन रेट जो
है वो 5-6 के अराउंड थ्रू आउट द इनिंग्स रखा, तो उस वजह से अगर छोटी मोटी पार्टनरशिप भी लगा के उन्होंने 50 ओवर पूरे खेल लिए तो ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया कि भाई नेदरलैंड जैसी टीम पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट मैच तो हारना ही था उनको। भले ही उन्होंने 200 स्कोर कर दिया, बट आई थिंक जो वो डिफरेंस मार्जिन लग रहा है ना विक्ट्री का, जो दिख रहा है, अगर आपने मैच नहीं देखा है 80 रन से, यू इट लुक लाइक कि भाई कन्विंसिंग विक्ट्री थी, बट आस्क बाबर आजम, इट वाजंट अ कन्विंसिंग विक्ट्री। उनकी बैटिंग में बहुत सारे लूप होल्स निकल के आए हैं। आई थिंक नेदरलैंड एक्सपोज्ड देयर बैटिंग लाइनअप, एंड वो तो नेदरलैंड थी जो उनके टेल को और लोअर मिडिल ऑर्डर को क्लीन नहीं कर पाई। अगर कोई एक टॉप 4 टॉप 5 रैंक टीम होती तो इट कुड इजीली हैव बीन 150 160 और स्कोर बाय पाकिस्तान, विच वो डिफेंड नहीं कर पाते। सो राइटली सेड, पाकिस्तान भी उतना परफेक्ट दिखी नहीं, बट वही है कि नेदरलैंड के साथ मैच था, दे वर एबल टू kind of get the 2 points and kickstart their campaign. Yeah, because you look at the World Cup and you say, as a top four team, as a strong team, you look at this World Cup and say कि भाई मेरे पास चार ऐसी टीमें हैं जो मुझे लग रही है कि टफ टू बीट, और चार ऐसी टीमें जो मुझे लग रही है कि भाई वी आर फेवरेट्स टू विन। तो मुझे ये चार गेम जीतने हैं, प्लस इसमें से एक दो जीत के वी क्वालिफाई फॉर द टॉप। ऐसे ही भाई देखना पड़ता है। यू डोंट लुक एट एवरी गेम एंड से कि भाई ये गेम अपना, ये गेम अपना है। Right. तो नेदरलैंड्स फॉर पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव, नेदरलैंड्स इज वन ऑफ दोस टीम्स के भाई ये 2 पॉइंट्स है, हम लोग इसमें थोड़ी रोटेशन करेंगे, we don't have to play our proper squad, and we can rest people. Obviously पहला गेम था तो उन्होंने proper squad खेली, but to a certain extent कि भाई अगर ये नेदरलैंड्स का गेम towards the end होता तो काफी प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल चुका होता। एंड देखा जाए अगर यही सिचुएशन बाद में आती और अगर इन्होंने प्लेयर्स को रेस्ट किया होता तो मे बी पाकिस्तान ये गेम हार जाता। एंड यही है कि भाई बाबर आजम भी नहीं चला, इमाम उल हक भी नहीं चला, और मेरे हिसाब से भाई मुझे तो एक उनकी जो लॉजिक नहीं समझ आ रही है, इमाम और फखर जमान खेले जा रहे हैं तब से इतने इतने गेम से, बट उनके पास अब्दुल्ला शफीक है जो he's been so good in the एशिया कप के उसको खिलाने का उसको मौका ही नहीं मिल रहा खेलने का, और मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा है। इज इट बिकॉज ही इज नॉट गुड अगेंस्ट स्पिन, इज इट बिकॉज ही इज नॉट गुड अगेंस्ट पेस, कि देयर इज अ सर्टेन फैक्टर व्हाई वी आर नॉट प्लेइंग हिम। इट्स नॉट लाइक कि भाई आप इमाम या फखर जमान दोनों में से किसी एक से बॉलिंग भी करा रहे हो कि आपको ओवर्स मिल रहे हो थोड़े बहुत, जो आपको ऑप्शन मिल रहा हो, तो समवेयर मुझे वो नहीं लॉजिक समझ में आ रही है अभी तक, एटलीस्ट पाकिस्तान की। तो आई थिंक थोड़ा सा उसमें वही है, मतलब इफ आई हैव टू काइंड ऑफ थिंक कि क्या सोच के खिला रहे हैं, तो वही है कि फकर जमान इज काइंड ऑफ अ प्रूवन प्लेयर इन दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस, तो उनको वही लग रहा है कि शायद मे बी कर जाए, मौके पे काम हमारे आ जाए। सो दैट इज द ओनली लॉजिक विच आई सी, बट आई काइंड ऑफ अग्री विद यू कि भाई हाँ, मतलब काइंड ऑफ उनको रोटेट किया जा सकता। हाँ, और बस एक ही एडवांटेज अगर पाकिस्तान इसको गेम से लेगी, एज यू मेंशन, और जो उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था कि भाई पाकिस्तान वो काफी धीरे खेलते हैं, बट जनरली इस बार रिजवान की 90 की स्ट्राइक रेट, साउथ शकील 130 की स्ट्राइक रेट, नवाज इज वेल टुवर्ड्स द एंड 90-95, व्हिच इज नाइस टू सी, because you want to be able to have that tail and your lower middle order play that way. जब हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स या बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर्स बाहर आते, you don't expect them to play a run of ball या less than a run of ball. You always expect them to maybe start off slow and then pace it up and take it up to 100, 115, 130 strike rate, जो कि आपको ओडीआई में चाहिए होती है towards the end as well. तो पाकिस्तान को भाई अपने काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, बॉलर्स को सही करना पड़ेगा, एंड आई थिंक Just one thing on Netherlands as well, and kind of tells कि पाकिस्तान how not up to the mark they were, कि भाई मैं पढ़ रहा था नेदरलैंड का, जब उन्होंने क्वालिफाई किया था वर्ल्ड कप से अभी तक, दे वेंट टू ईच एंड एवरी बोर्ड इन द ऑफ द टॉप 10 टीम्स एंड आस्क कि भाई हमारे साथ बायलेटरल खेल लो, हमको प्रैक्टिस करनी है वर्ल्ड कप, एंड एवरीवन रिफ्यूज। तो उन्होंने कोई कम्पिटेटिव इंटरनेशनल गेम खेला ही नहीं है विद द टॉप 10 नेशंस फ्रॉम द क्वालिफिकेशन टिल दिस वर्ल्ड कप, एंड फर्स्ट टाइम उनके कंट्री में वर्ल्ड कप टेलीकास्ट हो रहा है। सो कहाँ से वो टीम आ रही है, मतलब दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिस, नथिंग, दे डोंट हैव दिस एक्सपोजर, स्टिल दे आर एबल टू काइंड ऑफ बोल आउट बाबर आजम एंड पाकिस्तान टॉप ऑर्डर। सो काइंड ऑफ देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि अगर टॉप 4 में आना है तो बैटिंग एटलीस्ट अपनी मतलब थोड़ा ठीक करें। एग्जैक्टली, you can't afford to miss out on any kind of points. You can't say कि चलो आज हार गए तो अगले गेम में देख लिया जाएगा, क्योंकि आपको भाई सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन सिक्योर करनी होती है, फिर आप बाद में देखो रोटेशन, इंजरीज और ये सब कैसे मेंटेन करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये वाला थोड़ा कंसाइज होगा, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। मैंने इतना इसको फॉलो नहीं किया था क्योंकि उस दिन मैं कार्नेज देख रहा था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की जो हो रही थी भाई वो गेम तो अभी जब उस पे जाएंगे तो एक अलग ही टॉपिक है। 156 पे ऑल आउट अफगानिस्तान इन 37 overs, 158 chased out in 34 overs. शाकिब अल हसन अगेन, भाई उसका तो मुझे तो लग रहा है कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, वो अभी का वहीं के वहीं रहेगा। मतलब आज भी 4 विकेट ले ही लिए उस गेम में भी। क्रूशल आई गेस बैटिंग में तो इतना नहीं रहा, बट एज अ कैप्टन हिमसेल्फ यार, द वे he's been
playing for Bangladesh cricket, it's quite inspiring. You know, कोई ऐसा player है नहीं कि भाई कौन सा 2007 में पहला था शायद उसका, 2007 11 हो गया, 11 15। से ही इज कैप्टन, हाँ मतलब तो 11 15 19 23 4 वर्ल्ड कप ही इज exactly, कैप्टन। exactly. So he's right up there for in terms of Bangladesh cricket as well. मुझे बस एक कंप्लेन थी भाई अफगानिस्तान बॉलर से कि यार आई थिंक दीस आर सच सिमिलर कंडीशंस फॉर देम, और उसमें से कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो रेगुलरली आईपीएल खेलते हैं भाई। राशिद खान ऑब्वियसली बीइंग द मेन कल्प्रिट आई वुड से, जो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई he'll have a field day. बांग्लादेश will really be annoyed by his kind of spells, but वो मुझे देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी। To a certain extent, मोहम्मद नबी as well plays in the IPL. उसमें भी कोई मुझे इम्पैक्टफुल बॉलिंग कहीं नहीं दिखी। तो जनरली मैं थोड़ा जो डिसअपॉइंटेड था बस वही था कि भाई अफगानिस्तान की बॉलिंग से ठीक है, थोड़ा आपको मोरल डाउन होता है, you're kind of defending 156, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा, बट एट द सेम टाइम as experienced bowlers Rashid Khan and Nabi should have taken charge, even Mujibur Rahman, and said कि भाई ठीक है, we'll get use of some of the wickets and carry Afghanistan forward, but वो एक बहुत ही वन साइडेड गेम लगा मुझे। आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटेड होगा अफगानिस्तान की, मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था 2 पॉइंट्स ग्रैब इन करने का, बट समहाउ उनकी बैटिंग एकदम ही कोलैप्स कर गई, एंड काइंड ऑफ यू गॉट अ फील फॉर राशिद एज वेल एंड दीज बॉलर्स की भाई कुछ भी नहीं था उनके पास बचाने के लिए। एंड बांग्लादेश के बैट्समैन भी मतलब सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस है, सो ऑब्वियसली वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड काइंड ऑफ you back them to score 160 and get the team through. Just your on Shakib Al Hasan, one last thing कि भाई I don't want but I hope just from his point of view कि वो भाई एक सेमीफाइनल तो पहुंचा दे बांग्लादेश को, so because उनके फैंस यार हाँ। मतलब like you would kind of agree with me कि इंडियन फैन से ज्यादा इमोशनल है। इवन इफ दे उनकी टीम उनको पता है हारेगी और हारती भी है, फिर भी वो रोते हैं। हाँ। उनको पता है हमारी टीम हारेगी, वो जाते हैं वहां सपोर्ट करते हैं और रोते हैं। तो आई वांट कि भाई उनका जो हीरो है कुछ तो उसको ट्रिब्यूट मिले यार, मतलब ही इज बीन द हाँ। बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ, सो आई जस्ट होप कि मतलब कुछ मैजिकल करे बांग्लादेश इस बार। इन कंडीशंस हैं सब कॉन्टिनेंट के, सो लेट्स सी। You always have those few players where you feel for them and say, yeah, okay, this guy deserves maybe a World Cup, maybe a trophy, maybe something to say, I did something in my career. And obviously, his individual stats speak for himself. Shakib Al Hasan, and but एक वो होता है ना कि भाई अपनी country के लिए भी कुछ करा हो या कुछ किया हो, तो no doubt he's done a lot, but there's nothing to show for it, I guess is what I'm trying to imply over here. भाई कोई ट्रॉफी नहीं है, कुछ नहीं है। बट द अदर गेम दैट डे, साउथ अफ्रीका श्रीलंका, भाई मैं सच बताऊं तो मैं उस दिन कहीं पे बिजी था काम पे, और मैंने कहा यार दोनों दो गेम्स चल रहे। मैं साउथ अफ्रीका श्रीलंका देख रहा था, लंच ब्रेक चल रहा था मेरा, तो मैंने कहा लगाता हूँ। मैं लगा के देख रहा था, और उस टाइम पे आई थिंक 2 सेंचुरीज हो चुकी थी। एडन मार्करम वाज जस्ट कमिंग आउट या समथिंग, he was playing very slow. I think it was like 27 of 32 या something like that. He was playing normally. I was like ठीक है, अभी बना लेगा कुछ 50-60. South Africa is looking good. मैं खाना खा रहा हूँ यार, ये कर क्या, and he just goes berserk उसके बाद। और मैं पहले देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ये तो बिल्कुल एबी डिविलियर्स एस्क इनिंग्स चल रही है अभी साथ। पहले उसकी 100 हुई है, तुम्हारा खाना खत्म हुआ। मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मैं खाना खा के मैं चला गया। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या कर रहा है ये अंदर। बट क्रेडिट इज साउथ अफ्रीका। आई थिंक वी बोथ सेड कि जब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, हाँ, उन्होंने दोनों ने कहा था कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो अपने होम कंडीशन में तो बहुत अच्छी खेल रही है, क्या इंडिया में ये रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं। ग्रांटेड दिल्ली थोड़ा छोटा ग्राउंड है, थोड़ा आसान है रन स्कोर करना। श्रीलंका ने भी काफी मतलब 325 326 बना ही लिए थे एंड में, इवन व्हेन दे वर चेसिंग इट डाउन। बट टू सी द वे डिकॉक and Van de Dusen and Aiden Markram, they three played on that day was fabulous. I mean, we talk about ODI cricket being boring. वो एक ऐसा गेम था जो वही देखने में ऐसा जबरदस्त मजा आ रहा था। एब्सोल्युटली, एंड काइंड ऑफ जो किलर मिलर इंस्टिंक्ट लास्ट में देखने को मिला कि भाई हम्म। 400 के पार पहुंचा दिया उसने स्कोर। वो तो न्यूज इतनी हिडन रही, बिकॉज मैं तो स्कोर देख के मैंने कहा यार 300, मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया। मैंने कहा यार मैंने देखा ही नहीं अभी तक उसको। तो एक ऐसे ही होता है ना कि अगर कोई टीम कर सकता है ये सब, तो भाई साउथ अफ्रीका ही कर सकती है। वी ऑलवेज सीन एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला एंड दीस गाइस डू इट बैक इन द डे। और अब ये जो नई साउथ अफ्रीकन काइंड ऑफ टीम है जो
आ रही है. Yeah, These guys are just as good absolutely. as the other one. और फिर उनकी दो सबकी स्ट्राइक रेट देख लो तो 150 above है. There's only Quinton de Kock and I think who is it Van Babuma. Dusen जिनकी थी. उसकी भी 160 पे आउट हुआ. वो 160 की स्ट्राइक रेट पे आउट हुआ है. तो पूरी टीम हाँ, की स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर थी उस दिन की. अच्छा। जनरली सभी एंड ने. काइंड ऑफ जो उनका बैट्समैन, वो देखो बवुमा जो मतलब फेल हुआ उस मैच में, ही हम्म. हैज, आई थिंक ही इज सेकंड इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट हंड्रेड्स दिस ईयर, हम्म. सो वो अभी हम्म. क्लिक ही नहीं किया है, एंड दे आर ऑलरेडी स्कोरिंग 428, सो पता नहीं यार, मतलब साउथ अफ्रीका, बट वही है यार, मतलब क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, साउथ अफ्रीका प्लेड वेरी वेल, बट मैं वही कहूंगा इनका हर वर्ल्ड कप का यही है, दे स्टार्ट ऑफ वेरी वेल एंड दे हम्म. सडनली फॉल आउट ऑफ द टूर्नामेंट इन वन गेम, सो आई होप इस बार ऐसा ना हो, एंड आई सिंसियरली होप कि भाई कुछ मतलब डिकॉक बंदा बेचारा इतना रोता रहता है हर समय, कुछ उसको भी मिल जाए, आई होप। मुझे भाई मैं हमेशा आई रिमेम्बर दैट 2015 सेमीफाइनल जब वो आई थिंक व्हाट वाज इट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था ना, जब न्यूजीलैंड 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 जीती वो थी तो साउथ वो अफ्रीका का ही जिस बंदा था तरह जिसने से इतने रन मारे हाँ थे, वो हाँ। जो सब गिर गए थे एकदम से ग्राउंड में, दे वर ऑल क्राइंग. आई वाज लाइक आई फील सो बैड फॉर देम यार, एक वर्ल्ड कप तो डिजर्व करते ही है. बट या ऑनेस्टली वेरी हैप्पी विद दैट परफॉर्मेंस. एंड बॉलिंग को भी क्रेडिट जाता है यार, दे द वे दे बॉल्ड. श्रीलंका वर गेटिंग क्लोज बट दे मेड श्योर कि वो प्रेशर डालते रहे, रन्स बहुत कंसीड करे. तो इट बी नाइस टू सी हाउ इंडिया एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द टीम्स प्ले इन दिल्ली. इससे ये तो क्लियर हो गया कि भाई दिल्ली में बहुत सारे रन आने वाले हैं. रन आने वाले हैं। हाँ क्योंकि बट यार ग्राउंड छोटा है श्रीलंका और. से आई वाज डिसअपॉइंटेड यार, द वे दे वर हम्म. प्लेइंग इन द एशिया कप एंड द वे दे वर प्लेइंग इन इवन इन द प्रैक्टिस गेम्स, राइट, अच्छा खेल रहे हम्म. थे काफी, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग दैट दे कंसीडर्ड 428 विद द काइंड ऑफ स्पिनर्स दैट दे हैव एंड द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक दैट दे हैव एंड द काइंड ऑफ क्लेवर कैप्टन शनाका, मतलब अच्छे से मैनेज करता है यार अपनी टीम को, उसके कोच के साथ जितने भी बैंटर्स चलते हो ऑफ द फील्ड, बट he's a good captain, and bowling lineup is also good, and these are subcontinent conditions, and you are a subcontinent team, and there's a saying our team that comes out and scores 428 and you lose by almost 100 runs, so I think very Sri Lanka really needs again, उनके पास obviously reasons हैं कि मतलब injuries वगैरह होती रहती हैं उनकी, and of course transition phase उनका खत्म ही नहीं हो रहा जब से जयवर्धने एंड संगकारा गए हैं, हम्म. तो बट स्टिल यार, मतलब दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, एंड they should buck up and come back strong in the next. No, it almost seems like they still haven't recovered from that that Asia Cup final loss. Yeah, Because you would have guessed कि Sri Lanka, Bangladesh, these guys are kind of subcontinental teams, तो उनके पास एक slight advantage तो होता ही है. But yeah, South Africa really surprised everyone there with the way they played. I think they've got a big break right now. If I'm just looking at the schedule, there's a bit of a break for South Africa. So oh, in terms of fixtures, I think South Africa के पास काफी अच्छे हैं, where they've got a few strong games and then a few weak games in between, और फिर से strong games. So it's a good chance for them to kind of capitalize on them and before the teams get into cricket. जो होता क्या है कि भाई जब आप किसी strong team को towards the end खेल रहे हो ना, तो ये होता है कि they've played so many matches, अब उनको एक set हो जाता है और वो आपको उनको हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ज्यादा. So realistically you would always like to play the strong teams early and then the weak teams later on, क्योंकि उस टाइम तक वो demotivate हो चुके होते हैं. वो मे बी they're mathematically out of the tournament. वो तो सिर्फ एक टूर्नामेंट कंप्लीट करने के लिए खेल रहे होते हैं. So somewhere they look at that as well. I think means Australia के against the next match the 12th of October को actually before yeah, the India I Pakistan am game. हाँ. I am going to watch that game, मतलब in Oh, studio perfect. If लखनऊ you've में। got any videos, do send it over क्योंकि वो जबरदस्त मजा भाई आएगा उसमें. हॉटस्टार मेरे पे केस कर देगा। He's like, वरना मैं मैं तो फ्री का लाइव दे कर रहा दूं हूँ. भाई। Anyways, that'll be a good game to watch as well. South Africa, Australia, दोनों बहुत जबरदस्त. I think कहाँ है game है is in Lucknow, yeah, obviously. तो लखनऊ, हाँ। भाई interesting game होगा वो भी. Talking about the main game of this kind of podcast, India versus Australia, भाई मजा आया देख के, लेकिन मैं इंडिया से गुस्सा. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार राहुल को जल्दी आउट. मैं फुली प्रिपेयर्ड था कि जब हुआ क्या, मैंने इंडिया की इनिंग्स देखी, फिर मैं नीचे गया, मैं नाश्ता बना रहा था, फिर एकदम से उसपे मेरे दोस्त ने मुझे कोई मैसेज भेजा कि इंडिया 2 for 2. एंड देन मैंने कहा यार 2 for 2 क्या बोल रहे हैं, मजाक कर रहा होगा ये, क्योंकि इज अ पाकिस्तान फैन. तो कि मजाक कर रहा है मेरे साथ बैठ, मेरा चलता रहता है उसके साथ. तो ठीक है मजाक कर रहा है. मैंने ESPN खोला और एकदम से आ गया 2 for 3. मैंने कहा एक सेकंड ये क्या हो रहा है. मैंने लाइव स्ट्रीम खोली, मैंने ये सच हो रहा है. फिर एकदम से श्रेयस अय्यर उसमें आउट हो, मेरी लाइव स्ट्रीम थोड़ी पीछे चल रही थी. फिर राहुल आता है, मैंने कहा रुको, जब ये आउट होगा तब मुझे मजा आएगा, क्योंकि फिर मैं पॉडकास्ट में बैठ के कुछ कह सकूंगा. क्योंकि अगर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई अगर इंडिया हार जाए
है वो एक तरफ है, केएल राहुल का बोलना. बट आई गेस I'll backtrack here and say that the way we handled that was well done. I think generally for KL Rahul, Kohli, Pandya, all three of them, credit goes to them for being able to handle, especially KL Rahul and Kohli. Before we get into the batting though, India की bowling is जबरदस्त है. Very impressed with the way we did that. 199 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना इतना आसान नहीं है किसी भी kind of pitch में. We've seen Australia adapt to every sort of pitch and come back and play so well. David Warner had a great start. Mitchell Marsh को फौरन ही निकाल दिया. Then that catch from Kohli as well. Beautiful to see. अगर मैं अपने दोस्त को कोट करूं तो great catch, didn't need to dive or roll around on the pitch because क्यों कर रहा है ये सब. But Steve Smith as well, both of them doing what they do best. वही किया इंडिया ने कि पार्टनरशिप नहीं बिल्ड होने दी, which was nice. I think Bumrah, very happy for him कि मतलब जिस तरह से he was not that great in the Asia Cup and we were kind of जो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था तुमसे पिछले आई थिंक किसी स्ट्रीम में कि 3 में से 2 किसको सिलेक्ट करना है, and we were kind of agreeing कि बुमराह को हटाना चाहिए, बट शमी को हटाया, बुमराह को बैक किया एंड बुमराह डिलीवर्ड टुडे. आई थिंक मिचेल मार्श को 0 पे आउट करना कोई मजाक नहीं है एंड ही वाज हिज लाइंस वर वेरी एक्यूरेट, हिज लेंथ्स वर वेरी एक्यूरेट. स्टार्क को बढ़िया यॉर्कर्स डाल रहा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स. सो आई थिंक गुड टू सी दैट बुमराह इज बैक. आई थिंक देन एक विकेट गिरने के बाद काइंड ऑफ वार्नर एंड स्मिथ वर काइंड ऑफ taking the game away from us and then in came Kuldeep and then of course our Jadeja. I mean, so happy for Jadeja again. I thought Jadeja taking wickets is a kind of real bonus for us. मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब he is not even the go-to bowler. मतलब अगर वो विकेट ना भी ले तो भी उसको टीम से कोई हिलाएगा नहीं. When he takes wickets, India's bowling attack becomes lethal. And वही हुआ. I think great job done and we were able to bundle them out. Special shout to Virat Kohli, man. Like the way his intensity on the field, मतलब बंदा अलग लेवल की फिटनेस, अलग लेवल का जोश लाता है. Literally, I don't know if you saw that, but I would like to shout out one specific instance. As a cricket fan since 25 years, I have never seen it. मतलब आई थिंक जैम्पा था या कौन था, उसने लॉन्ग ऑन पे शॉट मारा, ठीक है, एंड विराट कोहली मतलब इतना लॉन्ग ऑन से उसने बॉल को ऐसे अटैक किया एंड जैम्पा वाज लिटरली रन आउट फॉर टेकिंग अ सिंगल फ्रॉम लॉन्ग ऑन. मतलब अगर वो डायरेक्ट हिट पड़ जाती है, हाँ डायरेक्ट हिट, मतलब कौन सा फील्डर वर्ल्ड में होगा जो लॉन्ग ऑन से सिंगल ना लेने दे. दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ विराट कोहली भाई. मतलब एंड और एक कैच छोड़ा था फर्स्ट स्लिप पे रोहित शर्मा ने. आई थिंक रोहित शर्मा मतलब जिस तरह से कर रहा है यार, अपना जोक बना रहा है, आज भी 0 पे आउट हुआ है एंड उसने जो कैच छोड़ा, पता नहीं यार ये कब हो गया कि विराट कोहली को रिप्लेस कर दिया उसने फर्स्ट स्लिप पे. आई थिंक हमेशा से विराट कोहली रहता था राइट फर्स्ट स्लिप पे, स्पिन पे, एंड वो पता नहीं यार. आई थिंक विराट कोहली इज बेटर स्लिप फील्डर, ही इज मोर एजाइल देन रोहित शर्मा. सो ग्रेट गेम फॉर विराट कोहली, वेरी हैप्पी फॉर हिम. बैटिंग पे अगर मैं क्विकली आऊं तो आई थिंक अगेन एज यूजुअल, मतलब मैं तो यार इतना इरिटेट, 2015 याद आ गया मुझे यार, जो सेमीफाइनल था ना, मतलब जहां पे हम 320 या कुछ चेस कर रहे थे एंड वी स्टार्टेड कोलैप्सिंग. वही हो गया था यार 2 पे 3. एंड भाई जो ये मतलब रील्स आती है इंस्टाग्राम पे कि सडनली विराट कोहली फ्रॉम अथीस टू पूजा वूजा करने लगा है एंड उसका लक बदल गया है. सही में लक बदल गया भाई. 20 पे 3 था एंड ही लिटरली गेव अ कैच जो छोड़ दिया वहां पे हेजलवुड ने. अगर वही 20 पे 4 हो जाता फिर विराट कोहली आउट एंड पता नहीं क्या होता यार, मे बी वी वुड हैव बीन बंडल्ड आउट फॉर अंडर 100. एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई थिंक जो वर्ल्ड क्लास पार्टनरशिप, आई थिंक दैट इज व्हाट इज अ टिपिकल वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस जो केएल राहुल और विराट कोहली ने दी है. स्पेशली केएल राहुल यार, मतलब द वे जो क्रिटिसिज्म उसको होता है, जो मजाक, जो मीम्स उसके बनते हैं, आफ्टर दैट हैविंग दैट कंपोजर, बिल्डिंग द इनिंग्स. उसने खुद बोला यार कि इनिशियली आई वाज लुकिंग टू प्ले लाइक अ टेस्ट मैच, जो तुमने भी बोला राइट शुरू में. दोनों में दिख रहा था, दोनों में दिख रहा था जिस तरह से वो खेले. आई थिंक कोहली वाज व्हाट 12 ऑफ 35 समथिंग, ही वाज आल्सो 7 ऑफ द नेक्स्ट 15-20 बॉल्स. तो वो दोनों ही काफी स्लो खेले. आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि दोनों में से कोई भी 100 नहीं मार पाया. आई थिंक बोथ ऑफ देम डिजर्व 100s एंड आई थिंक राहुल ने तो दिखा भी दिया कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ. पता नहीं यार जीतने पे इतना दुखी कौन होता है यार. मतलब वो कह रहा है वो दुखी हो गया कि ये छक्का क्यों चला गया, चौका क्यों नहीं गया. पहला बैटर ऐसा देखा है जिसको जो 6 पे ऑफेंड हुआ है. भाई सही में मैच जिता दिया और मतलब दुखी हो रहा है कि भाई 100 नहीं हुई मेरी. और फिर सुनो भाई, बंदा मतलब उसकी सेल्फिशनेस दिख जाती है, ठीक है.
उससे पूछा कि उससे पोस्ट मैच हाँ पूछा उससे, कि भाई तुम हाँ। 2 पे 3 हो गया था तो तुम उस पे क्या कहना चाहोगे। तो कह रहा था भाई क्या बोलूं मैं तो मतलब जस्ट गया था शावर लेने की भाई अभी 30 मिनट बाद तो मेरी बैटिंग आएगी। पर मैं तुरंत आया, मैं कपड़े वपड़े पहने बैटिंग करने आ गया। मतलब भाई उसने लिटरली मजाक उड़ा दिया जो 3 आउट हुए उनका कि भाई तुम हम्म। इतना भी नहीं रुक पाए कि मैं शावर कंप्लीट करवाया। सो बंदा है तो भाई जबरदस्त, लेकिन मैच मौके पे जिता दिया। सो आई एम ओवरऑल भाई वेरी प्लीज्ड विद दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, there's a lot of positives to take for India. I think generally जो मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव लगा इस गेम से वो ये था कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, ठीक है हुआ, फेयर हम्म इनफ, वो होता है कभी कभी होता, बट जिस तरह से द टीम वाज स्टिल कंपोज, द वे हम्म द नेक्स्ट बैट्समैन दोनों कोहली केएल बोथ केम इन, दे सेड कि नहीं, we're not going to play rash, we're not going to try and attack, we're going to make sure भाई हम लोग अपनी गेम खेलेंगे, एंड में चाहे 100 रन बनाने पड़े लास्ट 10 ओवर में 100 रन बनाएंगे, पर अभी अपना गेम खेलेंगे, कंट्रोल करेंगे इसे, और वही उन्होंने किया। दे प्लेड इट वेरी स्लो, 20th ओवर तक वी वर व्हाट 55-60 रन, व्हिच इन हम्म इन एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट इज अनहर्ड ऑफ। भाई टेस्ट मैच में आजकल 20-50 रन नहीं होते 20 ओवर में, उससे भी ज्यादा होते, 70-80 होते यूजुअली। तो जी समवेयर द वे दे प्लेड कि उनको पता था कि यार ये इनिंग्स डीप ले जानी है, क्योंकि द ओनली वे ऑस्ट्रेलिया वुड हैव वॉन कि भाई विकेट्स ले ले, और जब ये 3 विकेट गए तो कहीं से लग रहा था कि अगर ये 1-2 विकेट कहीं से इन्होंने लिए और टेल एक्सपोज हुई तो ये ऑस्ट्रेलिया की गेम है, फिर तो ये इंडिया कभी नहीं वापस। और हम्म जब वो तीसरा विकेट गया मैंने कहा भाई धोनी कब आएगा पहले ये बताओ, और फिर मुझे सही याद बात आया है। कि भाई वो तो है नहीं। तो एक एक वो तो था मेरे बैक ऑफ द माइंड। तो धो बट इट धोनी गोज की टू आत्मा थी उसमें, उसमें केएल राहुल में केएल में, आज। केएल में। हाँ हाँ। नहीं यार, अब मैंने भाई केएल का बहुत मजाक उड़ाया इस चैनल पे, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत मजाक उड़ाया, बट क्रेडिट वेयर इज ड्यू यार, दिस गाय ऑनेस्टली जो एशिया कप से लेकर आज तक जो अभी तक जो उसका फॉर्म चल रहा है, और अगर नेक्स्ट मैच में ये 0 में आउट हो भी जाता है तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस हैव द राइट टू से कि हाँ दिस गाय इज नॉट परफॉर्मिंग, बिकॉज रियलिस्टिकली जनरली ही इज डन रियली वेल ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स जब से वो इंजरी से वापस आए। तो टू सिट हियर एंड से कि भाई ही डिजर्व्स एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म वुड बी रॉन्ग, बिकॉज द वे ही इज प्लेइंग इज इनक्रेडिबल, he's up there with the way Kohli was playing in 2016 so far। अगर मैं as far as to say, मैं केएल राहुल की बहुत तारीफ करता नहीं हूँ, मैं रुक जाता हूँ बिफोर बहुत ज्यादा हो जाए और फिर अगली बार 0 पे आउट हो जाए मेरी वजह से। टॉकिंग अबाउट दैट इज वेल यार, मुझे मुझे इम्प्रेसिव ये भी लगा कि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स द वे दे प्लेड दैट फर्स्ट 15-20 ओवर्स, जो नई बॉल उन्होंने यूज करी, और हम लोग कहते हैं कि भाई स्पिन पिच है, चिपक स्पिन पिच है, बट अगर कोई फास्ट बॉलर स्किलफुल हो और एक्सपीरियंस हो हम्म फास्ट बॉलिंग का तो दे कैन टेक समथिंग आउट ऑफ दैट पिच। और वो पहले 20 ओवर्स आई थिंक जितनी बार कोहली ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश करी है, फिफ्थ स्टंप की बॉल खेलने की कोशिश करी है, मैं तो कसम से बता रहा हूँ, मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई अगर तूने टच कर दिया इसको तो तू सही समझ लियो क्या होने वाला है तुम्हारा। आई थिंक ईशान क्योंकि किशन ऐसे ही तो आउट हुआ था, ही वाज हाँ, ट्राइंग टू डू समथिंग सिमिलर। हाँ, तो हर, और वो पता है क्या होता है, एक मेंटल गेम होता है ना बैटर और बॉलर के बीच में। अब वो उसको हेजलवुड स्टार्क दोनों को पता है कि ये कोहली खेलेगा जरूर, क्योंकि कोहली हाँ की भी ईगो है, वो भी मारना चाहेगा जरूर याली शॉट, और वो भी वही बॉल करे जा रहे हैं, और कोहली भी हर शॉट ट्राई कर रहा है, कोई ऐसी शॉट नहीं कि भाई चलो लीव कर दे या छोड़ दे कि भाई मैं खेलूंगा ही नहीं ये शॉट, वो भी अटेम्प्ट कर रहा है, उसको आगे आके इंटाइस कर रहा है, तो बस वही डेंजरस था देखने के लिए। बट yeah, honestly, दोनों की सेंचुरी नहीं हुई, but both of them, the stand they had was as good as a century. I think 150 runs की almost partnership थी as well. Pandya obviously coming in at the end to kind of just finish the game off because Kohli, और best part पता है मुझे ये भी लगा कि भाई कोहली the way he got out and he went to the dressing room, भाई जो हंगर दिखता है ना वो प्लेयर के अंदर, वो इसके अंदर दिख रहा था जिस तरह से वो reactions दे रहा था ड्रेसिंग रूम से। I don't know if they were animated for the camera or anything, but somewhere you feel as a player he has the hunger not only to win the World Cup but personally break the records as well, and I think this is a perfect kind of opportunity for him to do that. So my takeaway from Australia will be कि यार स्ट्रॉन्ग टीम को हराया है, ठीक है टॉप ऑर्डर थोड़ा बहुत कोलैप्स किया, एक दो चीजें जो इंप्रूव करनी, बट एट द सेम टाइम यू कांट रियली फॉल्ट एनीवन अदर देन आई गेस रोहित शर्मा, अगर उसको कुछ बोलना है, बट अगेन वही है कि भाई वन ऑफ गेम है, अभी टू अर्ली टू जज है, एक दो गेम्स थोड़ा सा देखने पड़ेंगे यार बिफोर। अनलकी हाँ, भी है वो, मतलब अगर हाँ, अंपायर नॉट आउट दे देता तो नॉट आउट होता, अंपायर्स कॉल था, तो थोड़ा सा अनलकी भी है, बट ठीक है यार। मतलब द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी इन दिस गेम, द टेक अवे फॉर मी इज, बहुत टाइम बाद यार मैंने देखा कि किसी वर्ल्ड कप गेम में या किसी बड़े टूर्नामेंट के गेम में इंडिया वर काइंड ऑफ कोलैप्सिंग एंड हम्म, वी नॉट ओनली शोड अ फाइट, वी एक्चुअली एंडेड अप विनिंग द गेम। सो हम्म, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिस फीलिंग की भाई, मतलब एंड विराट कोहली पे बर्डन बढ़ गया है यार ये शुभमन गिल के जाने की वजह से। आई डोंट नो हम्म, हाउ मेनी गेम्स ही विल बी ऑफ, बट यू नो राइट कि मैं शुभमन गिल को बहुत ज्यादा बोल रहा था कि ही माइट बी वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स, बट अभी वो नहीं है, तो अभी लॉट इज ऑन विराट कोहली एंड केएल राहुल।
सो आई होप दे कंटिन्यू टू प्ले। आई थिंक हमारा नेक्स्ट गेम किससे, नेदरलैंड से है, सो अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। ओके, सो या आई मीन शुड बी एन इजी वन, बट लेट्स सी। नहीं वो एक ऑब्वियसली एक बिग फैक्टर है, नॉट हैविंग शुभमन गिल, द फॉर्म दैट ही इज इन एज वेल। और ऑब्वियसली अगर वो जब वो वापस आता है, यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू गेट राइट अवे एंड सेंचुरी और स्कोर अ मैच विनिंग इनिंग्स, तो यू हैव टू गिव हिम टाइम एज वेल ऑन दैट। बट जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर एंड से कि भाई रोहित शर्मा, ईशान किशन, डू वी वांट टू स्वैप द ओपनिंग पेयरिंग अराउंड, एंड केएल राहुल को तो छूना नहीं चाहिए, वैसे तो केएल राहुल तो वहीं पे रहना। बट दैट श्रेयस अय्यर कमिंग इन एट नंबर 4 today, do we need to look at that and say कि maybe we promote KL into 4 and say कि we need to have Sky in there instead of Shreyas Iyer? और यार श्रेयस अय्यर का ये भी है कि 2-3 मैच जो उसने खेले, ही इज काइंड ऑफ प्लेइंग फास्ट, सो मे बी उससे ओपनिंग करवाने की कोशिश भी कर सकते हैं। हम्म एंड मे बी ईशान किशन, बिकॉज ही वाज प्लेइंग वेल इन द मिडिल ऑर्डर, राइट, मतलब ईशान किशन, सो आई हम्म वांट हिम टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर, एंड आई वुड हैव सेड कि केएल से ओपनिंग करवा दो, लेकिन भाई मिडिल ऑर्डर में केएल इज एब्सोल्युटली किलिंग इट, सो भाई वाई आज टू। ओपन ही कर रहा था, सेवन जब हाँ, सिक्स ओवर पे आप हाँ, सिक्स ट्रू, ट्रू। थर्ड फोर्थ ओवर में आप ओपनिंग बाहर विद आ रहे एडेड हो तो प्रेशर, ओपनिंग विद एग्जैक्टली एडेड प्रेशर कि मैं आउट हुआ तो नीचे कोई नहीं है। ओपनर्स के एग्जैक्टली पास तो ये होता है कि हम तो मार के आउट हो जाएंगे, जैसे सहवाग था, हम तो मार के आउट हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं था आज, ओपनिंग विद एडेड प्रेशर, सो सही बात एग्जैक्टली है। बट ग्रेट पॉइंट की मतलब, लेकिन यार स्काई, मतलब आई डोंट ट्रस्ट स्काई टू बी ऑनेस्ट, मतलब उसका जो 50-50 वाला है मुझे कि भी भाई वही। चलेंगे नहीं चलेंगे, तो वर्ल्ड कप में उतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। मतलब आई थिंक स्काई यही कर सकते हैं मे बी कि या तो शुभमन गिल फिट हो जाए, पता नहीं उसका डेंगू कितना सीरियस है हम्म या कितना, हाउ हाउ गुड इज ही रिकवरिंग, बट हाँ वीकनेस तो हो ही जाती है यार बॉडी में ऐसी बीमारी के बाद, सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट आई आई थिंक दे कैन कंसिडर श्रेयस अय्यर, जिस तरह से वो तेज खेलना चाह रहा है, ओपनिंग माइट सूट हिम, आई डोंट नो, बट हाँ हाँ, लाइक we'll have to ईशान kind of किशन एंड रोहित शर्मा, आई डोंट नो मैन, आई होप दे क्लिक इन द नेक्स्ट गेम, आसान सा है थोड़ा अफगानिस्तान के अगेंस्ट। No, but I think Afghanistan game will be a good kind of opportunity for India to test out a few things. I would still back Sky. I think generally you're right कि इतना ट्रस्ट आप नहीं डाल सकते उस पे, बट अगर आपके पास टीम में पांड्या हो तो फिर मे बी यू कैन प्ले स्काई एज वेल, कि चलो अगर आउट भी होता है या आपको एक वो एक वाली इनिंग्स नहीं मिल पाती जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके पास पांड्या है बैकअप में और जडेजा है बैक। और तो मुझे एक और जो सरप्राइजिंग नहीं लगा, बट मुझे थोड़ा सा एक ऑड लगा कि इंडिया वुड प्लेइंग विद 3 स्पिनर्स। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जब मैं कल अपनी प्रेडिक्शंस कर रहा था मैंने कहा यार इंडिया 3 स्पिनर्स खेल तो सकती है, बट मुझे लग नहीं रहा था करेगी। इंडिया करती नहीं है वैसे, ऐसे 3 स्पिनर्स आउटराइट खेलना, एक मीडियम पेसर, 2 पेस बॉलर्स, तो समवेयर आई थॉट के आई डोंट नो वेरी रिस्की गेम चल रहा है ये। जब मैंने सुबह लाइनअप्स देखी तो मैंने कहा यार पता नहीं 3 स्पिनर्स आई चलेगा थिंक कि नहीं उसके चलेगा, बट ठीक, इट वर्कड आउट 5 विकेट्स। तीन रीजंस थे, हैं मेरे हिसाब से। पहला तो ये है कि भाई चेन्नई हिस्टोरिकली हम्म स्पिन फ्रेंडली ट्रैक। दूसरा ये है कि कुलदीप को ये लोग इंटेंशनली हाइड कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, हम्म अभी जितने भी मैच थे, कि भाई उसको हम्म एक्स फैक्टर के लिए तरह लाएंगे, तो डेफिनेटली उसको तो खिलाना ही था। तीसरा रीजन है कि अश्विन का होम ग्राउंड था, हम्म तो प्लस स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, सो ये तीन रीजंस की वजह से मुझे लगा कि भाई ना आप अश्विन को हटा सकते थे, ना आप कुलदीप को हटा सकते थे, हम्म और जडेजा को तो आप हटा ही तो नहीं आप हटा सकते नहीं। हो, तो इस वजह से आई थिंक हमने हाँ, हो तीनों सकता को है ही क्योंकि लिया है। मैं कल सोच रहा था, मैंने कहा हो सकता है भाई शार्दुल ना भी खेले तो कोई थर्ड पेसर ही आएगा, और मुझे नहीं लग रहा था कि भाई इंडिया विल बी सो कॉन्फिडेंट इन देयर स्पिन कि भाई तीनों स्पिनर्स खिलाएंगे भाई। बट यू लुक एट दैट एंड यू से कि दिस गोस टू शो के होम कंडीशंस कितनी मैटर करती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू हैड ग्लेन मैक्सवेल एंड ज़ैम्पा बोथ बॉलिंग, कुछ नहीं अफेक्ट कर पाए, जीरो इफेक्ट। एंड ज़ैम्पा को तो वन ऑफ द हाईएस्ट इकोनॉमीज थी उसकी तो कंपैरेटिवली फ्रॉम द अदर बॉलर्स, हाँ, तो जीरो करेक्ट। इम्पैक्ट था उसमें, तो इट थिंक जस्ट इट जैम्पा जस्ट वाज काइंड ऑफ, पता नहीं लाइट्स के अंदर क्या, मतलब स्पिन खेलना इजी हो गया था, आई डोंट नो, आई होप इट वाज नॉट द केस, बिकॉज आई थिंक वही है कि थोड़ा उनके स्पिनर्स को उतना एक्सपोजर नहीं है, एंड जैम्पा वाज ग्रेट बॉलर, बट समहाउ आज उसका दिन नहीं था, सो एंड कभी कभी बैट्समैन को भी क्रेडिट देना चाहिए, आई थिंक विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट राइट नाउ, एंड केएल राहुल इज वन ऑफ हिज best forms of his career. So I think it was more of a batting एग्जैक्टली। genius than a bowling fault. So I would not judge too much about Zampa or Maxwell. Right? Exactly. We're making all of these kind of assumptions based off of one games. तो यार obviously teams को थोड़ा time लगता है settle in होने में, and once the crux of the games kick off, that's when we'll find out कि भाई कौन किससे बेहतर है, कौन कहाँ पे है। और जहाँ तक बात करें भाई next 5 games की, Netherlands New Zealand, which should be an easy game for New Zealand obviously जिस तरह से वो खेलना है. Talking about Absolutely. Bangladesh, England as well after that, and then you've got Pakistan. The three big games are the 3 games that I guess everyone's eyes will be on. Pakistan, Sri Lanka, Australia, New Zealand, as well as India, Afghanistan. Obviously, you want to see every Indian game. Bangladesh, England.
I think we both can agree this is a game England can bring back their form and hopefully come back to life in this World Cup before we kind of rule them out. Yeah, absolutely. Yeah. Your last word was right. Like if they lose this, we'll हाँ. surely rule them out. So पता नहीं यार, बट अब मुझे कॉन्फिडेंस उतना आ नहीं रहा है बिकॉज बांग्लादेश के पास मोमेंटम है, राइट? हम्म. उन्होंने मतलब अभी मैच जीता है पहला, एंड सब कॉन्टिनेंट कहाँ पे है? धर्मशाला में है। धर्मशाला. सो हाँ. मतलब वो थोड़ा इंग्लैंड फ्रेंडली कंडीशन है, थोड़ी ठंडी हम्म. जगह है, राइट? सो लेट्स सी। आई होप इंग्लैंड काइंड ऑफ, आई डोंट नो, आई एम 50-50 इन दिस। बांग्लादेश भी मैं चाहता हूँ जीते, इंग्लैंड भी मैं चाहता हूँ जीते। सो and it will not be as one side. It can be one हम्म. sided, but at least on paper अभी उतना one sided लग नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि इंग्लैंड के पास भाई, आई थिंक इंग्लैंड ऑन पेपर लुक स्ट्रांग, उनके पास बिग नेम्स है, बट ऑन द फील्ड वी कैन क्लियरली सी कि भाई बांग्लादेश के पास वो एक एडवांटेज है कंडीशंस की और फॉर्म की, क्योंकि अभी वो लास्ट गेम जीत के आए, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली होगा, चाहे वो अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स हो, कोई भी हो, आप किसी को भी हराते हो आपके पास एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो होता ही, तो एक वो एक फैक्टर जरूर आएगा उसमें। पाकिस्तान श्रीलंका भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस तरह से पाकिस्तान स्ट्रगल करी थी, एट द सेम टाइम श्रीलंका माइट हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट उन्होंने स्कोर काफी बनाया था। 300 is a respectable total. So for a team like Pakistan, it'll be tough to chase something like that. अगर श्रीलंका उसको they put that on the board on that day as well. So it's going to be an important game for both teams, because must win games are both for them. I think ये भी 50-50 है मेरे लिए. It'll be hard to predict that. Hyderabad में, so Pakistan will be well aware of the conditions. Last game में वहीं पर उन्होंने खेला था. They've been training in that kind of condition for the last few days as well, since they've arrived from Pakistan itself. और दिल्ली से तो बहुत ही different conditions है, तो श्रीलंका we might see a different side to Sri Lanka, I guess, especially in the bowling. आई थिंक दोनों टीम्स एक स्टेटमेंट मेक करने की कोशिश में होंगे। सो बोथ विल कम आउट वेरी हार्ड, वेरी कम्पिटिटिव गेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट यार एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही, इतने सारे पहले तो इतने प्रैक्टिस गेम्स रख दिए हैदराबाद में, फिर अभी इतने मैचेस भी, फर्स्ट गेम वीक नहीं, मतलब जो भी फर्स्ट 5 मैच जो हुए हैं उनमें भी एक हैदराबाद में था, अभी दूसरे 5 मैच में फिर हैदराबाद में 2 मैच हैं। सो आई डोंट नो व्हाई इतना फेवरेटिज्म चल रहा है हैदराबाद के साथ। आई होप बारिश फिर से ना आ जाए हैदराबाद में, एटलीस्ट 0% प्रेसिपिटेशन रहे। आई सिंसियरली होप। इतना डिपेंडेंसी बना दिया हैदराबाद पे यहाँ पे। आई थिंक नॉर्थ टाइम ऑफ द ईयर इज कि भाई नॉर्थ इंडिया में बारिश इस समय नहीं होती है, सो नॉर्थ इंडिया में इनको गेम्स रखना चाहिए थे रादर देन साउथ इंडिया। सो आई डोंट नो व्हाई दे डिड इट, बट आई होप बारिश ना आए। बट इन दिस हु वुड यू से, मतलब इफ यू हैव टू प्रेडिक्ट कौन जीतेगा? Yeah, my hopes would be Pakistan, because मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान could be the surprise element of this tournament यार, but it's a tough one. Again, ये पता है वही है कि दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं कि ऑन द डे अगर क्लिक कर गई तो ऑपोजिशन को पूरा उड़ा देंगे, और अगर क्लिक नहीं करी तो खुद अपने आप को उड़ा देंगे। दोनों टीमें ऐसी हैं। आई थिंक पाकिस्तान भी ये केपेबल है करने के, और श्रीलंका भी, दोनों ये केपेबल है बिल्कुल। करने के। तो वही है कि आई थिंक पाकिस्तान आर बेटर सूटेड, मे बी बिकॉज उनके देव अंडरस्टूड द कंडीशंस। लास्ट गेम वहीं पे खेला, प्रैक्टिस हैदराबाद स्टेडियम में कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, 2 हफ्ते, 1.5 हफ्ते से, जब से आए हो पाकिस्तान से, तो बस आई थिंक दैट्स व्हाई आई वुड गिव देम द एज जस्ट अ बिट। आई थिंक या 60-40 पाकिस्तान टाइप का लग रहा है मुझे भी। हाँ, आई एग्री। इंडिया अफगानिस्तान उसके बाद है, थोड़ा इजी गेम इंडिया के लिए। आई डोंट सी इंडिया रेस्टिंग एनी प्लेयर्स दिस सून। मे बी वी माइट सी अ बिट ऑफ अ चेंज इन पेस अटैक, बुमराह और सिराज की जगह वी माइट सी बुमराह एंड शामी। लास्ट टाइम शामी ने बहुत अच्छा खेला था अफगानिस्तान अगेंस्ट दैट हैट्रिक, कंडीशंस बहुत अलग थी, बट दैट्स वन थिंग टू कंसीडर एज वेल। उसमें ज्यादा बात करने के लिए है नहीं उस गेम में। आई थिंक दिल्ली इज अ ग्राउंड वेयर both teams are kind of going to score a high target. Maybe put Afghanistan to bat first, put pressure on them, and then claim an easy win. But जो interesting game होगा उस हफ्ते का, वो होगा भाई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। Why do I have New Zealand? South India, Australia and South Africa actually. थर्सडे को लखनऊ में, जो you're gonna go watch, तो भाई या हॉटस्टार को छोड़ के गेम को देखना। I hope it's an interesting game, क्योंकि भाई दोनों टीमें वैसे स्ट्रॉन्ग टीम है, तो इंटरेस्टिंग जरूर होगा। It's a एंड आई थिंक 50-50. ऑस्ट्रेलिया के तो मल्टीपल गेम्स है, काइंड ऑफ होम ग्राउंड ही सही है ऑस्ट्रेलिया के लिए लखनऊ। आई थिंक 2-3 मैच है इनके लखनऊ में। सो आई होप एक अच्छा मैच तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई थी, आई थिंक साउथ अफ्रीका में, दैट वाज वेरी हाई स्कोरिंग। एंड लखनऊ का ग्राउंड थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इसलिए पाता है, ग्राउंड एंड पिच बोथ, की भाई बहुत ज्यादा बॉलिंग कंडीशंस बना देते हैं एंड रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। आउटफील्ड भी बहुत लंबी है, आई थिंक 70+ मीटर्स की आउटफील्ड है। सो पिच में तो दे हैव मेड अ चेंज, इट्स अ न्यू पिच।
सो लेट्स सी क्या कैसे बिहेव करती है, एंड आई एम होपिंग फॉर अ हाई स्कोरिंग 350 प्लस रन्स गेम, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने पिच कितनी इंप्रूव करी है, क्योंकि लखनऊ की पिच वही है, इफ यू स्कोर 250 to 300 इट इज मोर देन कम्पिटिटिव। हम्म। अभी नई पिच इन्होंने क्या बनाई है वो तो भाई गेम पे ही पता चलेगा। आई थिंक डायरेक्टली इतना बड़ा मैच हो रहा है नई पिच से, सो लेट्स सी। आई थिंक पूरा रिवैम्प किया है स्टेडियम एंड पिच फॉर दिस वर्ल्ड कप, सो इट बी इट्स अ ग्रेट किक स्टार्ट इन लखनऊ। आई थिंक 5 games हैं एंड द फर्स्ट गेम इज अ ब्लॉकबस्टर वन, सो या वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम। हाँ, बहुत ही अच्छा गेम होगा, क्योंकि जनरली आई थिंक लखनऊ की पिच भी सिमिलर है चिपक से। You usually have an Eden Gardens. These three are well known like spin pitches in India, primarily. So obviously ICC are regulating these pitches, and they've kind of hinted towards making it more fairer, making sure कि भाई games में you get to see some pace attack as well. You get to see spin. जैसे आज की भी pitch चेन्नई की, वो regular चेन्नई pitch नहीं लग रही थी, where a bowler was having a field, spinner was having a field day, pace ball के लिए कुछ नहीं था, batter के लिए कुछ नहीं, but somewhere new ball, pacers के लिए जबरदस्त चल रही थी। द बॉल जैसी पुरानी हो रही थी, स्पिनर जबरदस्त कर रहे थे, और मिडिल ओवर्स में बैटर्स के पास अपॉर्चुनिटी थी स्कोर करने की। तो इट वाज अ गुड पिच टू वॉच, इट वाज अ गुड गेम टू वॉच, एंड इवन दो लो स्कोरिंग था, इंटरेस्टिंग था। वैसे ही बांग्लादेश और श्रीलंका का भी गया, सॉरी बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान का भी गया, पाकिस्तान नेदरलैंड्स का भी गया। तो these are the kind of games you want to see. You don't want a one-sided game where one team kind of takes it away. So एंड I'll be द very मोस्ट surprised if a सरप्राइजिंग good game. एलिमेंट इज की बाउंस थी यार, मतलब इफ यू सी रोहित शर्मा वाला भी ऊपर जा रहा था वो, एंड Mm, कितनी गे बॉल थी जडेजा की जो मतलब पड़ के ऊपर उड़ गई थी mm, बिल्कुल अचानक से। सो समहाउ मतलब इंडियन पिचेस पे अगर बाउंस आपको मिल रही है, दैट मींस कि भाई डेफिनेटली आईसीसी एंड बीसीसीआई हैव वर्कड टुवर्ड्स mm. मेकिंग इट द पिचेस अ बिट मोर सेना फ्रेंडली। एग्जैक्टली एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू सी। ठीक है भाई, आपको होम एडवांटेज चाहिए होती है, जो इंडिया को ऑब्वियसली मिल रही है, और वो मिलेगी, बट एट द सेम टाइम आपको एक ऐसा टूर्नामेंट नहीं चाहिए जहां पे कितना वन साइडेड हो जाए कि आप बस वो देखना ही बंद हो जाए। So yeah, anyways guys, that's pretty much it for today's podcast. A lot of discussions, a lot of kind of analysis, which I guess इतना हम लोग करते हैं इस podcast में, बड़ा आज ज्यादा हो गया, but yeah, something I want to add on to this podcast, I guess, do a bit of analysis. आज मैं नोट्स भी बना के आया था, if you guys are interested in reading all of those. मैंने कहा यार प्रोफेशनली कर वर्ल्ड कप कवर, but yeah, I hope you guys enjoyed today's podcast. So Yash, once again, thank you very much for being on, and hopefully when we do the Pakistan review next week, we'll kind of have a Pakistan fan as well. I'll try and get him on and then make sure that we have an interesting debate. I'll throw out my notes. उसके लिए notes नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ दिल चाहिए भाई, सिर्फ just to kind of roast Pakistan all day long. But yeah, it'll be interesting to see that. Make sure you add us to your playlist. Make sure you subscribe. Make sure you leave a like rating. Follow कर लो यार social media pages को, ताकि सारी latest news मिलते रहे, सारे posts को like करते रहो, support करते रहो. Really means a lot. You guys have been supporting us incredibly well over the last few weeks, leading up to the World Cup. Let's continue it and even increase that throughout the World Cup. So thank you guys for watching, and we'll see you guys next time.